everyone, welcome to our channel. In the last video, we had started the projection of lines. If you haven't watched the video, I have linked the video above. Do check it out. Today we will discuss the traces of a line. So let's get started. Now let us see what does this trace of a line means. Now see, when a line is inclined to a plane, it will meet that plane. That means अगर कोई line किसी plane के साथ inclined position पे है at an angle suppose theta, और उस line को अगर हम extend कर देंगे in the direction of plane, तब क्या होगा? The line will meet the plane at some point, and the point in which the line or the line produced meets the plane is called its trace. उसी point को हम लोग trace of a line बोलेंगे. Now the trace of a line is again two types. We have the horizontal trace and next to हमारा से vertical trace. So আমি এটা এটা কে চাম, what is this horizontal trace and what is this vertical trace. Now let us see the first, the horizontal trace. So horizontal trace আগত কি চাই লওঁ. Now suppose this is the figure. So a figure to this is the line AB. Now this AB line is inclined at an angle theta to the horizontal plane. Now when we draw the front view, we will see from this side, and the front view will be represented by this A dash B dash line. Now when we see from the top, ऊपर से जब हम देखेंगे, then we will see a reduced view. This is the top view AB. Now you see here, if we extend this line, then this line will intersect at the horizontal plane at this point. So this is the point of intersection. So this point is known as the horizontal trace or HT. Now again we have another line here. This is the front view, which is represented in the vertical plane. Vertical plane or amar juntu ase itu hol amar front view. Now if we extend this front view line, this line also intersects in the XY line. So this point will be represented by the letter H, and this will be called as the trace of the front view of line AB. So we will have 2 points, one is our HT, other is your H. So let us see what is this horizontal trace. When a straight line is inclined to the HP, this is the straight line and it is inclined to the HP, then the point of intersection of the line to the HP, this is the point of intersection of the line with the HP, is called its horizontal trace and is generally represented by HT. So this is your horizontal trace HT. Now let us see the vertical trace. Let us see the vertical trace here. This is the line which is inclined at an angle phi to the vertical plane. This AB. AB is the line which is inclined at an angle phi with the vertical plane. Now here we cannot draw the front view first because the front view is the reduced view. So what we have to do? This is the true length of the line. So we have to draw the top view first. पहले हम लोग को ऊपर से देखना पड़ेगा, टॉप व्यू हम लोग को बनाना पड़ेगा, बिकॉज टॉप व्यू जो है हम लोग का, ये हम लोग का ट्रू लेंथ है. So let us draw the top view. This is the top view of the line, and again if we see from the front, then we will get the front view. Now you see here, if we extend this line towards the plane, what will happen? This line will intersect the vertical plane at this point. This is the point of intersection.
So this point will be called as vertical trace or VT. Similarly, this is the top view of the line, and when we extend the top view of the line towards the plane, this line will intersect the XY line at a point V. So this V will be called as the vertical trace of the top view of line AB. Now you see in both the figures, this is one figure and this is another figure. Now in both the figures, this VT and V, or we can say HT and H, these two are joined by a perpendicular line. So that means H and HT are located orthogonally, or we can say they are located perpendicularly. Similar is the case here. You can see this is VT and this is V. So both the points are located orthogonally. That means this is your 90 degree and this is also 90 degree. Clear? So now let us see what is this vertical trace. So when a straight line is inclined to the VP, this is the straight line AB and it is inclined at an angle phi to the vertical plane. Then the point of intersection of the line to the VP, this is the point of intersection of the line with the VP, is called the vertical trace and it is generally represented by VT. So this is your vertical trace. Now let us see some examples. First example is your line parallel to both the planes. So this is our figure. This is the line AB. Now this line AB is parallel to both HP and VP. This is the VP, this is the HP. Now let us try to draw the trace of this line AB. Now first of all, what do we do? We will draw the XY line. This is the XY line. Then what we'll have, if you want to draw the front view first, যদি আমি আগে front view to আকো, we have to see from this side. If all our positive sum, this line will be represented where? Here. So let us draw the front view. This is the front view. Now when we see from the top, ऊपर से जब हम देखेंगे तब ये जो लाइन है AB, इस लाइन का टॉप व्यू कहां पे आएगा? इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. और फिर जब हम इस प्लेन को रोटेट कर देंगे बाय एन एंगल 90 डिग्री, तब क्या होगा? ये प्लेन हम लोग का नीचे चला जाएगा. देन दिस टॉप व्यू AB will be where? Below the XY line. So let us draw the top view. Here these are the two projection lines and then this is the top view. Now we see that this is the top view and this is the front view. Now as this line AB is parallel to both HP and VP, so when we extend this line in this direction or in this direction, this line will never intersect the vertical plane nor it will intersect the horizontal plane. कहीं पे भी intersect नहीं करेगा, because जो हम लोग का line दिया है AB, ये line हम लोग का both the plane के साथ parallel है. तो जब both the plane के साथ parallel है, तब क्या होगा? ये जो line AB है, that line will never intersect the vertical plane nor it will ever intersect this horizontal plane. So that means what we can say, we have no trace in this case. So for case 1, we have no trace. Now let us move on to the next case. So what is our conclusion? Conclusion is a line has got no trace when it is parallel to both the planes. जब both the plane के साथ parallel होगा कोई line, तब हम लोग के पास कोई trace रहेगा नहीं. So there will be no trace.
Now let us see the next case. This is case number 2, line inclined to HP and parallel to VP. See this figure. This is the line AB. ये line AB है and that line AB is inclined to HP. HP के साथ हम लोग का inclined position पे है at an angle theta and the line is parallel to VP. VP के साथ हम लोग का parallel है. Now let us see. First of all we have to draw the front view क्योंकि जो हम लोग का top view है that top view is your what? Is a reduced view. So reduced view को हम लोग बना नहीं सकते. पहले हम लोग को true length का जो है that you have to draw first. So first let us draw the XY line. Then after that let us draw this AB line at an angle theta. So AB line को हम लोगों ने बना दिया है. This is the front view of the line A dash B dash and this inclination is your theta. Now उसके बाद जो top view है हम लोग का top view कैसे आएगा? That means from this A dash and B dash you have to draw projection lines like this. और जो हम लोग का अभी top view होगा that top view will be what? It is the reduced view of this line AB. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? Let us draw the top view. So this is our top view, the line joining the 2 points from this front view. तो front view और top view से front view और top view हम लोगों ने बना लिया. Now we are to find the trace. तो trace बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will extend this line, the front view line up to this XY line. तो जो फ्रंट व्यू का लाइन है वो हम लोग का XY लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा. दैट पॉइंट विल बी व्हाट? दिस पॉइंट विल बी योर स्मॉल एज क्योंकि यहां से जो एक्सटेंड होके आएगा दैट पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी योर स्मॉल एज. नाउ वी नो दैट दिस स्मॉल एज एंड HT जो है हम लोग का हॉरिजॉन्टल ट्रेस वो क्या होगा? एक they are located orthogonally. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? From this point H, we will drop a perpendicular. Then from the top view, इस top view से हम लोग क्या करेंगे? We will extend this top view and we will intersect the perpendicular. And the point of intersection will be called as the horizontal trace. So, इसको हम लोग बोलेंगे horizontal trace. So you can see here in this figure this horizontal trace and small h, they are located again orthogonally or they are located perpendicularly. So now let us come to the third case. Third case को हम लोग देखेंगे अभी. तो third case टुत्सवा की जिसे the line inclined to VP and parallel to HP. इबार हमार line to VP लोगोट inclined हुए से and HP logot parallel हुए से. Now this figure, this is the line AB which is inclined at an angle phi with the vertical plane and this line is what? It is parallel to the horizontal plane. Now again what we have to do? Let us draw the top view and front view first. तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग पहले फ्रंट व्यू नहीं बनाएंगे बिकॉज द फ्रंट व्यू इज द रिड्यूस्ड व्यू. टॉप व्यू जो है हम लोग का दैट टॉप व्यू इज द एक्चुअल और वी कैन से द ट्रू लेंथ. पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे. सो लेट अस ड्रॉ द XY लाइन फर्स्ट. XY लाइन को बना लिया. नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ द टॉप व्यू फर्स्ट. सो टॉप व्यू को बना लिया एट एन एंगल फाई विद दिस XY लाइन. फिर फ्रंट व्यू को बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्टर्स. सो दिस इज वन प्रोजेक्टर, दिस इज अनदर प्रोजेक्टर. सो दोनों प्रोजेक्टर को बना लिया. नाउ वी विल जॉइन द टू प्रोजेक्टर्स एंड वी विल गेट द फ्रंट व्यू. सो दिस इज द फ्रंट व्यू A dash B dash and we have the top view AB. Now let us try to draw the trace. ट्रेस बनाने के लिए द टॉप व्यू दिस टाइम वी विल एक्सटेंड बिकॉज ये जो लाइन है ये हम लोग का इंक्लाइन लाइन है, ये हम लोग का पैरेलल लाइन है. तो पैरेलल लाइन से हम लोग का कोई ट्रेस आएगा नहीं.
जो इंक्लाइन लाइन है उसी से हम लोग का ट्रेस आएगा। सो इंक्लाइन लाइन को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। दिस एक्सटेंडेड लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स वाई लाइन एट अ पॉइंट स्मॉल v। देन व्हाट वी विल डू, वर्टिकल ट्रेस जो VT पॉइंट है उसको हम लोग कैसे लाएंगे, we will draw a perpendicular from here. Now again this perpendicular उसको हम लोग क्या करेंगे, we will extend the front view line and this front view line will intersect this perpendicular line at a point and this point will be called as the vertical trace. Yeah, so this is the vertical trace VT and this is your small v. Now in your this question and your previous question, see we do not have the horizontal trace. यहाँ पे हम लोग का कोई horizontal trace नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो line है that line is parallel to HP, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे कोई horizontal trace नहीं है. In the previous question the line was parallel to VP, तो उसके लिए हम लोग के पास कोई vertical trace नहीं था, we had only horizontal trace. So what is the conclusion? A line has got that trace to which the plane it is inclined. जिस plane के साथ वो line inclined होगा उसी plane के साथ वो trace बनाएगा. If your line is inclined to VP, then it will make your vertical trace. अगर कोई लाइन horizontal plane के साथ inclined होगा then it will make horizontal trace. Clear? Now let us see the next example. Here what is given? The line perpendicular to HP and parallel to VP. अभी क्या हुआ, जो लाइन है हम लोग का, दिस इज योर AB लाइन, ये लाइन हम लोग का अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और VP के साथ पैरेलल है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द टॉप व्यू एंड द फ्रंट व्यू ऑफ दिस. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द XY लाइन. XY लाइन के बाद नाउ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल we will draw the front view because front view में हम लोग का true length आ रहा है. This is the true length. So we will draw the true length first. So this is the front view, A dash B dash आ गया. अभी front view आने के बाद जो top view है वो क्या होगा? When you see from the top view will only be a point because अभी हम लोग का क्या है, जो line है এই লাইনডাল আমার পারপেন্ডিকুলার হই আছে. সো পারপেন্ডিকুলার হলে কি হবে, when we see from the top we will be seeing only this point. এই पॉइंट है हम ये देखा पाऊं, यही पॉइंट हम लोग को दिखाई देगा. तो इस पॉइंट को का प्रोजेक्शन कहां पे होगा, it will be projected in the horizontal plane और after rotating the horizontal plane by 90 degree ये पॉइंट कहां चला जाएगा, that point will be below the XY line. So let us draw. This is the projector और जो हम लोग का top view है, this top view will be represented by this B point. किसी किसी book में you will find A and B both the points are given. That is also correct. If you give only one point which is visible to you, this is also correct. Now let us draw the trace. अभी trace हम लोग बनाएंगे. ट्रेस बनाने के लिए what we will do, you see this is the vertical plane or sorry this is the vertical line AB. Now ये जो line है, if we extend this line will intersect the horizontal plane at this point. So this will be our what, HT. ये हम लोग का HT point आ गया. अभी HT point आने के बाद you have to find the small h. तो स्मॉल एज कैसे निकालेंगे, यू हैव दिस फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू से जो हम लोग का इंटरसेक्ट करेगा XY लाइन पे दैट विल बी आवर स्मॉल एज. तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस HT. HT से हम लोग अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे
to this xy line, तो क्या होगा? You will have this small h here. So this is your horizontal trace HT, and this is the small h you have. So this is the case when the line is perpendicular to HP and parallel to VP. Now let us take the next example. Here we have line perpendicular to VP and parallel to HP. Now see here, this is the line AB, and this AB line, এবার কি হয়েছে, the line is parallel to HP, HP লগত parallel হৈ আছে and perpendicular to VP. Now let us draw the XY line first. XY line to agar pisot. Now this time we will draw the top view first. Agar ami top view to akim, because this is your true length. This is the true length of the line. So let us draw the top view. This is the top view AB. Now why this top view is below the line or below the XY line? Because after rotating this plane, what happens? This horizontal line becomes vertical. This is your XY line. So it goes below the XY line and it becomes a vertical line AB. Now if we see from the front, then only point B is visible to us, and this B point will be projected in the vertical plane. Now ইয়ার পর যেটা আমি projector রাখিলো, and finally we will got the B dash point. So B dash point to আমি পাই গলো. This is the front view and this is the top view. Now let us try to draw the traces. Now trace রাখিব লাগিলে what we have to do? This is the line AB. Now when we extend this line AB, a line dal को join होगा हमार कोई पहला vertical plane हो. So vertical plane में हम लोग का join होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? This point will have vertical trace. तो यहाँ पे हम लोग का vertical trace आ गया. Now we have to find small v point. तो small v को बनाने के लिए what you have to do? You have to drop a perpendicular from VT. Now when we draw this perpendicular will meet the XY line. So we will have the small v here. Now what is the conclusion? A line has got that trace to which plane it is perpendicular. जिस plane के साथ वो line perpendicular होगा, उसी के साथ वो trace बनाएगा. Like this is the plane, this is the line AB. ये line AB vertical plane के साथ perpendicular है. So it is making vertical trace. In your earlier question, जो हम लोग का line था, वो line हम लोग का VP HP के साथ perpendicular था. So we had horizontal trace. तो जिस प्लेन के साथ लाइन परपेंडिकुलर रहेगा, उसी प्लेन के साथ वो अपना ट्रेस बनाएगा. क्लियर? Now let us see the next example. Now here the line contained by HP and inclined to VP. So this is the case. Line contained by HP means line जो है हम लोग का वो HP में है, and this line is inclined to VP. VP के साथ हम लोग का incline है. So ये this angle phi is making with the vertical plane. Now let us try to draw the top view and front view first. We have the XY line. XY line को बना लिया. Now which view will draw first? We will draw the top view first, because this is the true length of the line. This is not the true length, this is the reduced length. So true length को हम first बनाएंगे. So this is the top view AB. AB को हम लोगों ने बना लिया. This AB will go below the XY line. Why? Because after rotating the horizontal plane, this AB goes below this XY line. उसके बाद front view बनाने के लिए
you have to draw two perpendiculars. This is one projector lines, this is another projector lines. तो प्रोजेक्टर लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, as this line AB is in the HP में है, तो जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये लाइन AB, this AB line will be represented where, in this XY line. तो इसीलिए हम लोग का XY लाइन तक हम लोगों ने दोनों प्रोजेक्टर को खींच लिया. नाउ we will draw the front view A dash B dash. Now let us try to draw the traces. So trace बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will extend this inclined line up to this XY line. So इसको हम लोगों ने extend कर दिया. So this is your XY line and this is the extended line and this is the intersection point. तो ये point हम लोग का क्या आएगा, this point will have VT. अभी हम लोग को बनाना है which is your V point. V point को बनाना है. तो V point को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, VT से परपेंडिकुलर खींचते हैं and from the front view we join that line. लेकिन यहां पे हम लोग का क्या है, we have the front view here only in the XY line. तो यहां से जो हम लोग का लाइन आएगा, that line will intersect this vertical trace at the same point and we have this small v here only. तो इसी पॉइंट पे हम लोग का स्मॉल v भी आएगा, वर्टिकल ट्रेस vt भी आएगा. क्लियर? तो ये क्यों आया है, बिकॉज योर लाइन AB इज इन द HP में है हम लोग का, तो इसीलिए जो हम लोग का फ्रंट व्यू है, that front view has been projected in this XY line. XY line पे आ गया, तो इसीलिए यहां से हम लोग का जो लाइन आ गया वो हम लोग का VT पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेगा and ultimately we will have VT and small v at the same point. Same point होते हमार दुईटा वाया है वो, VT आहिबो, V आहिबो. Now let us see the next example. Here the line contained by VP and inclined to HP. See here, this is the line which is contained by VP. So A line dal amar ki hoise vertical plane ot ase ebar. And line is inclined to HP. HP logot amar at an angle phi inclined hoye ase. So which view you will be drawing first? We'll be drawing the front view first because front view is the true length of the line. This is the reduced length. Again, first আমি XY আঁকি ললো, then we will draw the front view A dash B dash. Then what we will do? We will draw projectors from point A and B. So A dash and B dash are projector আঁকি লো. Now when we see from the top উপরপাজিটিয়া চাম আমি, then this line AB will be represented where, in the XY line, as this line AB is in the VP. VP যেহেতু আছে আমার, so কি হবো, এই line AB top view to আমার কোড আহিব XY line ত. So we have this top view AB in the XY line. Now let us try to draw the traces. Trace আঁকিব কাৰণে কি কৰিম, the inclined line is extended to intersect the XY line. So this is the point. We have small h. So small h পাই গলো, ht ক'ত পাম? Again similar to your previous problem, the same point will have ht because the top view is where, in the XY line. So top view to amar XY line ot ase, so e karone we will extend this line and ultimately the same point where we got this small h, we will got the same point ht also here. So ht to ami ইয়াতেই পাই যাম, h আৰু ht দুইটা পয়েন্টে আমার সেম জায়গাতে থাকিব. Clear? Now what is the conclusion here? When a line is contained by one plane, যেটা এডাল লাইন আমার
VP বা HP থাকিব contained by one plane and inclined to the other plane, unto plane or logot it is inclined, then its trace will come on the XY line. So XY line और हमारा trace to बोहिबो. That means कोई एक line अगर हम लोग का HP या VP में है, then और जो लाइन हम लोग का है वो लाइन हम लोग का अदर प्लेन के साथ इंक्लाइन है, तो ट्रेस कहां पे आएगा? ट्रेस विल बी ऑन द XY लाइन. तो यहां पे हम लोगों ने देखा ट्रेस हम लोग का XY लाइन पे आ गया. क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. हियर द लाइन contained by both the planes. ये जो हम लोग का है, यहां पे हम लोग का जो लाइन AB है, दैट AB इज प्लेस्ड इन द XY लाइन और इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. यहां पे हम लोग का इस पोजीशन पे हम लोग का लाइन है. सो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या होगा? इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस XY लाइन. तो पहले हम लोग XY लाइन बनाएंगे. नाउ we will draw the front view and top view at the same point. तो यहां पे हम लोग का A dash और A दोनों पॉइंट आएगा. सिमिलरली हियर यहां पे B dash और B पॉइंट दोनों पॉइंट आएगा. सो वन यू हैव द फ्रंट व्यू एज वेल एज द टॉप व्यू एट द सेम पॉइंट. तो यहां पे क्या होगा? हियर वी विल हैव नो ट्रेस, क्योंकि यहां पे हम लोग का जो लाइन है वो पहले से ही HP या VP में है, दोनों प्लेन में है. तो दोनों प्लेन में है, इसीलिए क्या है, जो लाइन है हम लोग का वो XY लाइन पे आ गया. तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे कोई ट्रेस नहीं आएगा. वी विल हैव नो ट्रेस इन दिस केस. नाउ लेट अस सी द लास्ट केस, which is line inclined to both HP and VP. Now for this is the line AB, and now this line AB is inclined at an angle of theta to the vertical plane and phi to the horizontal plane. So etu ami kenake akim. Now we will discuss more about the details of how to draw the line inclined to both HP and VP in my upcoming videos. Now you just only see the traces here. So this is our XY line. Now with this value of theta we will draw the front view. Then what we do, we will drop a projector. Then with the value of phi we will draw the top view. Now here we will see this AB line, this is intersecting the vertical plane and horizontal plane at this XY line. Similarly the front view and the top view দুইটা লাইনে কি হইছে, আহি পেলাই আমার XY লাইনত intersect হৈ আছে. So here in this XY line the A dash point and A point, both the points are intersecting. So we have HT point here, we have VT point here, we have small h and small b. All the 4 points are locating at the same point. So this is the case when we have line inclined to both HP and VP. So in the next video we will take up some examples based on the traces of our line. Okay, thank you. Thanks for watching. Do check out our other videos on the channel. If you have any query, you can write to us at the email address given in the description box. Do follow us on the Facebook page. Do not forget to hit the like, share and subscribe buttons. Also click the bell icon to never miss an update from our channel.